Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Another useful and informative video which is about how to change notification sound of Instagram and iOS 17 on any iPhone or iPad. So how to fix this issue? So first of all, I will request to my all friends, please subscribe and share my YouTube channel. Press the bell icon for more latest video. So fix this issue. जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम चेंज करने जा रहे हैं नोटिफिकेशन साउंड इंस्टाग्राम का। तो वो हम कैसे करेंगे, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले आपने सेटिंग को ओपन कर लेना है और फिर आपने साउंड और हैप्टिक्स में जाना है। फिर आपने आ जाना है टेक्स्ट ट्यून में। यहाँ से जो है अलर्ट्स ट्यून है और उसके अलावा रिंग ट्यून्स है और उसके अलावा क्लासिक्स है। तो यहाँ से आप जो भी सिलेक्ट कर लें वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ से अगर आप कोई और सिलेक्ट कर लें वो भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ से जो आपकी मर्ज़ी करे, मैं तो वही सेम रख लेता हूँ। तो उसके बाद ये आपने सेटिंग्स चेंज करके जो भी आपकी मर्ज़ी है, ऐसे नहीं कि ये आप कर दें या वो कर दें, हो जो आपकी मर्ज़ी हो, ठीक है। इसके बाद आपने आ जाना है इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम पर क्लिक करेंगे तो फिर आपने प्रोफाइल अपनी, ये आपको ऐसे दिखाई देगा। तो फिर आपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल ये थ्री डॉट्स पर सेटिंग एंड प्राइवेसी, and you have click on notification and then you have click on messages, and then you have turn on all of these settings. Message request is turned on, message from individual and then group chats on, message reminders, group requests, broadcast channels, channel messages. Turn off all these from this option and a problem will be fixed 100% working. So hopefully guys, after watching this video you will all know. If you have any problem, so please let me know in the comments box. Thanks for watching. See you in the next video. Do not forget subscribe and share my YouTube channel.